Another object q is moving with changing velocity of 5 minutes. Out of these two objects, which one has acceleration? Now, all my dear ones, since object P is moving with constant velocity, constant velocity, hence its acceleration must be zero, must be zero. And object Q is moving with changing velocity, changing velocity. Hence, it must have it must have non-zero acceleration if velocity is increasing, then acceleration is positive. If velocity is decreasing, then acceleration is negative. लास्ट वीडियो में कुछ वॉइस का इश्यू आया था, है ना? तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके संजना, इसलिए इसलिए मैं 15 से करा रहा हूँ स्टार्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, द ग्राफ बिटवीन टोटल लेंथ एंड टाइम फॉर अ particle moving along a straight line as shown in figure not possible. Why? प्यारे बच्चों, if we give some name OAB, so from O to A, path length is increasing, but from A to B, path length is decreasing. बेटा जी ग्राफ डाउनवर्ड है ना,
ए से बी तक ग्राफ डाउनवर्ड है, इसका मतलब पाथ लेंथ डिक्रीज हो रही है। प्यारे बच्चों, ये पाथ लेंथ होती क्या है? पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। पाथ लेंथ मीन्स बच्चों डिस्टेंस। सिंस distance can not be decreased, hence the part AB, the part AB of graph is not possible. बेटा, O से लेकर A तक का ग्राफ ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, बट A से लेकर B तक का ग्राफ हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहेगी या फिर इंक्रीज होगी। Hence, given graph is not possible. Hence, given graph is not possible. चलिए, अब हम करेंगे न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखिए, from the given velocity time graph, what can be concluded? Beta G, from the given graph, from the given graph, it is clear that body is moving with constant velocity. Constant velocity. And what else? Since velocity is constant, hence acceleration of the body is zero. Acceleration of the body is zero. So, in this question, we can conclude two things. What? Body is moving with constant velocity, and acceleration of the body is zero. And you can also say that graph shows graph shows uniform motion. So three things you can write. Okay, now I hope कि आपको क्लियर होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। What do the graphs 1 and 2 shows shown here indicates? बेटा जी, 18th question. Beta, see the graph very carefully. Here in the graph 1, in
Graph 1. The velocity of body. बेटा इसको हम वेलोसिटी बोलें या फिर स्पीड बोलें। यहाँ पे स्पीड लिखा है तो आप भी स्पीड इसको लिख सकते हैं। द स्पीड ऑफ द बॉडी is decreasing at constant rate and finally becomes zero। अब देखो क्या गौर से देखिए, आप यहाँ पर थी बॉडी, ये बॉडी नीचे आ रही है ऐसे करके इसकी स्पीड कम हो रही है और यहाँ पर आके इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ग्राफ 1। अब मैं आपको लिखूंगा ग्राफ 2 के बारे में। देखिए ए बी and C. What I have done here, I have written A, B, C in the graph 2. In graph second, the speed of the body decreasing at non-uniform rate becomes minimum at point B. At point B. Beyond the point A, and we can say that from B to C, the speed of the body increases non-uniformly. So these informations we get from the given two graphs. Okay. Any doubt in this question? Please confirm karo.
राइट इन चैट बॉक्स। चलिए हम डिलीट करके आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ग्राफ which corresponds to the motion with uniform retardation and zero acceleration. So मेरे प्यारे बच्चों 19th में जो ग्राफ ए है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड ग्राफ बी जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। Why? Because the graph is parallel to the time axis. And graph C यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है and they are asking two things: uniform retardation this one and zero acceleration this one. So मेरे प्यारे बच्चों this is the answer of the question number 19. चलिए अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों 20th, गिव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फॉलिंग बॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। बेटा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v square equals to u square plus 2as and s equals to ut plus half at square। अब आप देखिए यहां पर अप फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर पहले लिखूं डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन एंड दिस इज फॉर अपवर्ड मोशन। प्यारे बच्चों ये अपवर्ड का मीनिंग क्या है? अपवर्ड का मतलब अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ एंड सॉरी यहाँ पे डाउनवर्ड है तो हम लिख देंगे टुवर्ड्स द अर्थ।
towards the earth, and upward means away from the earth. मेरे प्यारे बच्चों, डाउनवर्ड मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लिखेंगे जी, और जो एस होगा उसको हम लिखेंगे हाइट एच। अब देखिए फॉर्म इक्वेशन कौन कौन सी हमारी बनती हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एंड h equals to ut plus half gt square. These are the three equations are made. But for upward motion, it means away from the earth, then what will happen? Acceleration would be minus g and s would be height h. So, प्यारे बच्चों, equation will be v equals to u minus gt, v square equals to u square minus 2gh, and h equals to ut minus half g t square. So I have written, beta they are asking, what are they asking? Give the equation of motion for a body falling freely under action of gravity. So beta ji falling freely. So this is your answer. This is the answer of question number 20. It means you have to write only one case downward. For your extra knowledge, I have taught the case of upward motion also. But according to the question need only this left part. This left part. Only this blue left part is the answer of the question number 20. Is it fine? Please confirm. Any problem, बच्चों? चलिए, अब मैं इसको डिलीट कर कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21। A body is thrown vertically upward with velocity u. Find the greatest height. Now, dear students, body is thrown vertically upward. So it means its final velocity will become zero and acceleration would be negative g, and use the initial velocity. Initial velocity, and h is the greatest height. Beta g, this is given, directly given, and this is we have written
Now, for upward motion, v square equals to u square minus 2gh. Why negative? क्योंकि motion है upward away from the earth. So g is negative. At the highest point, velocity becomes 0 minus 2gh. So 2gh equals to u square, h equals to u square upon 2g. This is the maximum height attained by the body. आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हम ग्रुप में यहाँ पे लिखिए, मैसेज करें चैट बॉक्स में। शैल आई गो हेड, आगे चलिए, बताएं। ओके, नाउ बच्चों सी क्वेश्चन नंबर 22। If the displacement of an object is proportional to the square of time, predict the motion of object। प्यारे बच्चों, displacement is directly proportional to the square of time। Predict the motion। देखिए, जब आप लोग 11th क्लास में आ जाएंगे तो उसको सॉल्व करने का मेथड अलग होगा। वहां पर हम कैलकुलस का यूज करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बट आप है अभी 9th क्लास में, तो आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? f इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। दिस इज द इक्वेशन। व्हेन body starts from rest, starts from rest, then u equals to 0। So s equals to 0 plus half at square, s equals to half at square। It means when a body starts from rest, then equation becomes like this। और प्यारे बच्चों, यहाँ भी तो यही निकल कर आया कि जो s है वो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। Hence we can say that when this displacement is proportional to t square, then the body is moving with uniform acceleration
बच्चों कोई भी डाउट कैसा भी प्लीज कंफर्म करें। ओके, संजना प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। बच्चों चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग अगर कोई डाउट हो तो। चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंस बिटवीन speed and velocity. Now, for this, we will make a table like this, and we will write here speed and velocity. Speed and velocity. Now, see the first one. Speed can never be zero, can never be zero or negative. But velocity can be positive, negative, or zero. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। स्पीड ना तो जीरो होगी ना ही नेगेटिव होगी, बट वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। नाउ सेकंड डिफरेंस, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर होता है और वेलोसिटी वेक्टर होता है। नाउ थर्ड डिफरेंस, नाउ बच्चों ये कंडीशन आपने देखी होगी, इफ velocity is zero, then speed must be zero. Velocity zero means for कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उसको इसको लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी। इफ एवरेज velocity is zero, then average speed
is not necessarily zero. But if average speed is zero, if average speed is zero, then average velocity must be zero. आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम देखेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन। 23 तो हो गया हमारा, 24 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है? एक्सप्रेस एवरेज वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes at a non-uniform rate and a uniform rate. बेटा जी क्वेश्चन नंबर 24, there are two cases when body is moving when average velocity, हमको लिखना है average velocity, when the velocity of a body changes at a non-uniform rate, then non-uniform rate velocity पहले कम है, फिर velocity increase हो गई। So average velocity equals to total displacement या फिर net displacement upon total time। ये हो गया हमारा केस 1। नाउ केस 2 क्या होगा? When velocity of a body changes at uniform rate, then average velocity equals to initial velocity plus final velocity upon 2। सो प्यारे बच्चों, आपको ये कंडीशन याद रखनी है
when body moving with uniform rate, non-uniform rate, then average velocity equals to net displacement upon total time. And when velocity of a body changes at uniform rate, then average velocity is equal to initial velocity u plus final velocity v divided by 2. आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम चलते हैं आगे। State the following situations are possible and give an example for each of these. State which of the following situations are possible and give an example of for each of these. तो देखिए, the first condition, an object with a constant acceleration but with zero velocity. प्यारे बच्चों, if you throw a body upward, जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो बॉडी ऊपर जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके एक मोमेंट के लिए वो स्टॉप होगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई बट एक्सेलरेशन फिर भी है। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward, then body comes at rest at the highest position, but experiencing but experiences acceleration due to gravity। प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, बॉडी रेस्ट में आ जाती है बट एक्सेलरेशन फिर भी होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर होंगी। अब आप लोग देखिए सेकेंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप।
प्यारे बच्चों, I'm telling you, if a body move in a circular path, if a body move in a circular path, then here at this point, body is moving in this direction, in the direction of arrow. Here at this point, body is moving in this direction, and here in this at this path, body will move in the direction of arrow. Now, it means the direction of displacement is this. But whenever a body move on a circular path, it experiences a force. This force is called centripetal force. प्यारे बच्चों, when a body move on a circular path, then it experiences a force. Centripetal force. बेटा जी centripetal force. Centripetal force. एंड बेटा जब फोर्स है देन एक्सेलरेशन भी होगा. इस एक्सेलरेशन में क्या होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. पीटल एक्सेलरेशन. देन तो हमने सिचुएशन दी. आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acceleration is perpendicular to displacement. आई होप कि आपको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी. Okay, now question number 27. What is acceleration? प्यारे बच्चों, the definition of acceleration. Acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity with respect to time. It means acceleration is delta v upon delta t. This is the formula of acceleration.
and its SI unit is meter per second square or meter second raised to the power minus 2. आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी